ग्रेड का जेई प्लस नीट कवर कर रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली वन शॉट जैसा हो गया, तुमको एग्ज़ाम के पहले हेल्प करेगा। सो वी आर नॉट ओनली कवरिंग द जनरल कॉन्सेप्ट बट हम उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। सो इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और बोर्ड भी लिखना है तो भी हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में द फर्स्ट इज कमिंग एंड दैट इज द जे थॉमसन मॉडल, राइट। सो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल आई थिंक हमने पहले भी पढ़ रखा है 9th ग्रेड में कि इट्स लुक लाइक अ प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर और वाटरमेलन मॉडल, कि भाई एक एटम है। सो जस्ट लाइक पॉजिटिव charge embedded here, similarly negative charge is also embedded. So total charge means total positive charge would be is equal to total negative charge, ठीक है। लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स था, तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है दैट वाज नॉट गुड एनफ टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल, इट शुड मूव। तो फिर बाद में दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, दैट इज कॉल्ड द रदरफोर्ड का। सो वी विल हैव द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है। सो जस्ट लाइक यहाँ पे एक लेयर ले ली जिसमें जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया था, एंड वी हैव लेट्स से गोल्ड प्लेट हियर। यहाँ से कुछ अल्फा पार्टिकल्स का रेज डाला गया इनके ऊपर, राइट। सो वी ऑलरेडी लर्नड इन द 9th ग्रेड का ही टॉपिक है कि भाई बहुत सारे पार्टिकल्स थे जो इसमें से पास हो गए, मैक्सिमम पार्टिकल पास्ड। कोई एक ही पार्टिकल था जो अपने ही पाथ पर बैक आ गया, राइट, वापस आया 180 डिग्री से। कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थे, कोई 30 डिग्री से, कोई 45 डिग्री से। तो इस तरह से वी गॉट टू नो दैट कि भाई इसका साइज ऑलमोस्ट एटॉमिक साइज रदरफोर्ड ने दिया था 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, और जो न्यूक्लियस का साइज था, न्यूक्लियस साइज वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 दे दिया था, है ना, मतलब 5 टाइम्स स्मॉलर दे दिया था, 10⁻⁻5 टाइम्स स्मॉलर दे दिया था। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, रदरफोर्ड ने किया, लेकिन एज वी नो दैट कि वो इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिंस वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल, तो वो मूव कर रहा था, एंड मूव करते करते इट वन डे इट विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मैटर। तो जिसमें एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू एंड E इज इक्वल टू h म्यू, सो वी गॉट द hc by lambda। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टर्स भी शो हुए थे कि दैट इज वन इज वेवलेंथ, अनदर इज फ्रीक्वेंसी विच इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, एंड फ्रीक्वेंसी को आप डिफाइन कर सकते हो c by lambda से। उसी पर भी फिर उन्होंने वेव नंबर दिया था, दैट वेव नंबर वुड बी इज इक्वल टू 1 by lambda। Then Bohr atomic model also being introduced, and that was the Bohr atomic model ने define किया था कि how the electron is fixed in a shell because of the two opposite balance forces. So angular momentum was given as a nh upon 2 pi, जहाँ n would be is equal to 1 2 3, and ये वाला जो value था वो angular momentum का था nh upon 2 pi. Radii of the Bohr also 0.529 n square by v। टोटल एनर्जी भी काउंट की गई थी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 13.6 v स्क्वायर बाय n स्क्वायर एंड -2.18 10 to the minus 18 v स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यहाँ z है एटॉमिक नंबर और n है शेल नंबर, तो जैसी शेल होगी वैसे वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट आंसर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो गिवन, दैट इज 2.188 10 to the power 6 v by n। z is the atomic number and n is shell number। And the one more thing has came at the same time, that was the hydrogen spectrum। तो इस स्पेक्ट्रम में ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ द इमेज ऑफ द रेडिएशन। तो उसमें वेव नंबर्स काउंट किए गए थे, दैट वाज द 1 by lambda इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर, जहाँ आर एच क्या रखा गया था, रेडबर्ग कांस्टेंट, एंड वैल्यू डाली हुई थी 109677 सेंटीमीटर इन।
याद रखना ये सारी चीज़ें इट्स वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, है ना, वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पेशीज। वन मोर थिंग, ये वाला लेक्चर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से पढ़ाई कर रखी है, तो इट्स जस्ट अ रिवीजन। फिर एक और फॉर्मूला प्रपोज हुआ था, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इज n2 माइनस n1 यानी n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2, जहाँ n1 ग्राउंड स्टेट है और n2 कौन सा है, एक्साइटिंग स्टेट। इफ द n1 is 1 then you can use that formula, सेम ही है, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर ही आ जाएगा। Then we have a next thing that is called the de Broglie wavelength। de Broglie wavelength ने dual nature शो किया था, dual nature of the particles or dual nature of the matter। So the de Broglie wavelength is h upon p, p is momentum, wrote it as a mv, and that the same formula we can convert to the kinetic energy. How? You just do the square both sides, so lambda square equal to h square upon mv square आ गया, 2 by 2 का multiply कर दो, so that become ke, so when you are putting this will be answer, स्क्वायर रूट ले लेना तो आ जाएगा ये। तो के को फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हो, जिसको तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह सकते हो। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि दैट 2 पाई आर इज इक्वल टू n circumference of the electron is n is the integer multiple of de Broglie wavelength। तो फर्स्ट शेल में है तो 2 पाई आर, सेकेंड शेल में है तो जस्ट मल्टीप्लाई 4 पाई आर, थर्ड शेल में है तो 3 पाई आर, लाइक 6 पाई आर, लाइक दैट। नेक्स्ट केस आता है जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रपोज, दैट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। He said कि finding an electron on the first position is going to be next to difficult. So x into delta p greater than equal to h upon 4 pi, जहाँ p को क्या बोला गया, momentum. So we will put the value on that. Quantum numbers also proposed by the Schrödinger, जिसमें हमारा एक principal quantum number है azimuthal, magnetic quantum number and the spin quantum number। L equal to 0 को you can write S, 1 को P, 2 को D और 3 को F। एन की वैल्यू माइनस एल से प्लस है, जो ओरिएंटेशन दिखाएगी, एम एस स्पिन दिखाएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ये बताएंगे हमारे सब शेल। सो वी हैव अ फाइनल सम मोर फॉर्मूलाज ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज दिस। तो एल इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो 2 आ जाएंगे, एल इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 6 आ जाएंगे। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन दीज सब शेल्स आर लाइक दिस। 2 पुट करोगे सो 2 2 4 प्लस 1, दैट इज बिकम 10। 3 पुट किया तो 3 to the 6 plus 1 and that is become 14, like this। Total number of subshell, so S में 2 है तो this is 1, just half हो जाएगा ना, P में 3, D में 5, like this, and F में 7। Orbital angular momentum is given h upon 2 pi root of L L plus 1, and the magnetic momentum is given by root of n n plus 2 Bohr momentum। So these were the quantum numbers, and last में electronic configuration came, that is given by the Aufbau। So Aufbau gave the modern electronic configuration based on the n plus L rule, lower energy से higher energy की तरफ जाना है, and when we are putting these value n equal to 1 and L equal to 0, so it's become 1s, has the lowest energy। Then we have 2 plus 0, so it become 2s, next energy। So like this way we have to fill the electron, and how we can write it down, so like we have 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, then 7s, 7p, then 8s। So electron is moving from lower energy to the higher energy level, like that। याद रखना, पहले से पढ़ा होना चाहिए, नहीं तो समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, है ना।
पहले से पढ़ा होगा तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो रिवीजन के लिए ये लेक्चर, इट्स अ रिवीजन लेक्चर, and that is 5F, 60, 7, 3 and 8S. Correct? But for the single electron, what you can do for single electron, one is मतलब प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ही चेक करेंगे बस, जैसे हाइड्रोजन के लिए। सो हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इज रीचिंग, बाकी नेक्स्ट एनर्जी लेवल इज 2, 3, जस्ट लाइक बोहर। फिर आते हैं नोड्स। नोड्स मीन्स वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। So we have a radial node. Radial node is n minus l minus 1. Angular node is L and total nodes is n minus 1. एंगुलर नोड को नोडल प्लेन भी कह सकते हैं और इसको स्फेरिकल नोड भी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वी रोट इट डाउन, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय द आइंस्टीन, और ये पार्टिकल बिहेवियर को शो करता है इलेक्ट्रॉन के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल के। तो टोटल एनर्जी मतलब सोर्स एनर्जी, उसमें कैसा था, ग्लास ट्यूब ली गई थी कनेक्टेड विद द हाई वोल्टेज बैटरी, और यहाँ पे मेटल है और यहाँ से सोर्स से एनर्जी डाली गई थी। तो सोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट, तो दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब अपने को दिखने पता चल जाता है ग्लोइंग से, क्योंकि जिंक सल्फाइड का लेयर लगा हुआ है। तो E belongs to the source energy. This is the work function, minimum energy required to bring the electron out, and that's the kinetic energy of electron or photon. हमने प्लैंक्स थ्योरी से इसको पुट किया तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। Now in the end we have some general terms, so that is isotopes, isobar, isotones, isoelectronic का क्वेश्चन बार बार आता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। These are some additional term, isosphere, same number of atoms and electrons, isodiphers, n minus p or a minus 2z value is same, paramagnetism and dimagnetism. Paramagnetic due to the unpaired electron and dimagnetic due to the paired electron. Apart from that, you can go with the Pauli exclusion principle. तो Pauli exclusion में क्या कहा था कि no two electron have the same quantum number. So if the quantum number is n, l, m or ms 0, 0, so ms value certainly would be the differ, plus half or minus half. So no two electron have the same quantum number. और एक हुन्स रूल, हुन्स ने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन विल फिल इन अ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, फर्स्ट विल गो इन द क्लॉकवाइज मैनर एंड आफ्टर दैट द पेयरिंग विल स्टार्ट। यू कांट डू लाइक दैट वे कि भाई डाला प्रिपेयर कर दिया, डाला प्रिपेयर कर दिया, दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न, दिस इज। सो दिस इज द रिवीजन क्लास ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, होप तुमको कनेक्ट हो गया होगा। सो you just keep commenting and subscribe the channel to get all such kind of videos. Thank you very much.